Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes, sir. okay. So we have one curve left, that is helix upon a cone and helix upon a cylinder. Okay, all of you know what is cylinder and what is the cone. Okay, cylinder in a simple position. What will be the front view in a simple? Suppose a cylinder is placed in a simple position, vertical position, Rectangle. rectangle. And what about top view? Our top is rectangle. Circle. Triangle. Circle. Circle. Okay, and in case of cone, So triangle and circle. Triangle. Triangle. in case of cone, isosceles triangle in the front view. And what about top view? Circle. 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 Okay, circle. Okay, we need this information. Okay, require this information for drawing helix upon a cone or helix upon a cylinder. Okay, now what is the meaning of helix? So helix is a curve generated by a point. Okay, helix is a curve generated by a point which moving around the surface of a cylinder, right circular cylinder or right circular cone in such a way that its axial advance is uniform with its movement around the surface. Okay. Okay. Its movement in the direction of axis of the cylinder or the cone is uniform with movement around the surface of the cylinder. Okay. Are you getting this one? No, sir. Anyone? Axial movement, is it clear? In the direction of axis, is it? Suppose cylinder is placed in a vertical position. Showing you. Suppose um, this is front view of a cylinder. Okay, and this is top view. Okay, let's draw axis. Okay, and suppose this is the axis. Okay, so axial movement means horizontal or vertical? So vertical. Vertical. Okay, axial movement means in the direction of vertical, and around the surface means in the So perimeter of that horizontal. cylinder. Yes, now audible. Yes, sir. Now audible na? And axial movement means axial movement in the direction of axis means either vertical upward or vertically downward. Is it clear? Vertically upward or vertically downward means इस direction में move करें या फिर इस direction में. This is called axial advance or axial movement. Now what about movement around the surface? In the perimeter of cylinder or in the surface of cylinder, not perimeter, surface of cylinder. Okay, visualize these things in a 3D way. Okay, three-dimensional way. Suppose the point is moving around the surface of a cylinder as well as in the axial direction. Now are you getting this?
Yes, sir. Somewhat. Yes, sir. Suppose this is end generator of a cylinder. Suppose a point is moving in this direction. Okay, so it is moving in an axial direction only, not around the surface. It is moving in a straight line in one generating. Suppose a point is moving like this. Okay, in axial direction also as well as around the surface. Okay, The solenoid. yes. Okay, let me show you a picture like this. Okay, now it is clear the movement of point in the direction of axis and around the surface. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so one second. So it will move like this also in a straight line around the surface, means in a circular path. Okay, suppose a point is moving in a circular path. So what will be the axial advance? 0, Yes, sir. 0. 0. Okay, but Yes. in case of helix, there is an axial advance. Okay, so for one complete revolution, means one complete circular motion. Okay, the axial advance of that point, one complete revolution, you can say one complete revolution, the axial advance of the point is called pitch, pitch of the helix. So here you can see from this point to this. Okay, this is the pitch of helix. It can be equal to the height of axis. Okay, or less than the height of axis. Okay, suppose the pitch of a cylinder is 20 mm. So what will be the length traveled by that point for one fourth of for one fourth revolution? That's a pitch 5 is mm. 5 mm. I Is don't it know. clear now? 5 mm. Clear? What is the meaning of pitch? It can be different from height also. Okay, height of the axis, height of the cylinder. The pitch will be given in the question. Okay, that the pitch of the helix is 20 mm or 30 mm, and the height of cylinder is 80 mm. It will be given. Okay, all the details will be there in question. Okay, clear. Now, what is the meaning of uniform movement? Suppose now see in this quest figure number 6.67 first. Okay, the pitch is given. Okay, and the pitch is divided into 12 equal parts. Can you see? The piece is divided into, and the notations are 1 dash 3 dash 6 dash 9 dash 12 dash. It is given. Okay, so suppose the piece is 12 centimeter. Okay, is it okay? The piece is 12 centimeter. So what about the distance p1 dash 1 dash 2 dash? It is divided into 12 equal parts. So one part will length of what one part equals to 1 centimeter. 1 One centimeter. Okay. centimeter. Okay, so now suppose around the surface the movement of the point means the distance of P1 from 1 dash is 2 centimeter. Okay, and if moving with a uniform ratio, so what will be the distance for P3 from 3 dash for uniform movement? It should be 4. not 4. I am asking about 3 dash, not 2 dash. 6. 6 for 6 dash 12 12. means the ratio is 1 by 2, and that should be maintained for all the points P1, P2, P3 up to P12. This is the uniform movement of point. Okay, if the point is moving in such a way, then you can call the curve as helical curve. Okay,
Now the concept is clear now. What is the meaning of helix? What is the meaning of pitch? Is it clear? Yes or no? These helical curves are used. Okay. कहाँ पे यूज होगा? Okay. Tell me the physical appearance. कहाँ पे देखते हो तुम लोग helical curve? So spring. Spring. Okay. Helical spring ही होता है. Okay. Good. Helical springs. और DNA. DNA strands. Okay. Very good. Screw और threads. Screw. okay. Screw, nuts. Nuts में क्या रहेंगे? Outside. Okay. Threads रहेंगे और bolts में inside रहेंगे. Okay. Nut, bolts. These are the example of the helix. Okay. Now, how to draw helical curve? Okay. So first of all, draw front view, top view of cylinder with the given dimensions. Okay. See, draw helix of one convolution upon a cylinder given 80 mm pitch and 50 mm diameter of a cylinder. Now, in this question, the height of cylinder is not given. Is it given? Only pitch is given. Pitch and the diameter of cylinder. So you can take pitch equal to the you can take height of axis equal to pitch length. Okay, for this question. Okay. Yes, sir. Okay. Okay, you can take height of cylinder equals to 80 mm for this question. Okay. So first of all, draw front view, top view. Okay, this is top view of that cylinder in a simple position, simple vertical position, and this one is this is front view of the cylinder. Okay. Now, for drawing any type of curve, we need points on the circumference of that particular curve. Is it? So that we can join those points and get the exact curvature of that particular curve, whether helix or cycloid or involute. So for getting those points, we need to divide circle into how many equal divisions? How many equal divisions? 12. Anyone? 12 or 8. 12. 12. In this case, 12. Okay. 12 equal divisions. Okay. In this PPT, okay, all the points, all the circles are divided into 8 equal parts. So don't copy this one. Okay. Divide that circle into 8 equal parts properly. Okay. Now, draw all the generators. Okay. For P and for 4, it is already drawn. Okay. Now draw generators for 1 and 7 also. Okay. So this one is representing the front view of point 7 and point 1. Okay. This is say O. Are you getting this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, 1 dash 7 dash. Then there will be 2 on and 6 also. There will be a vertical line for 2 and 6 and for 3 and 5. Now find out the intersection. For getting uniform movement, find out the intersection of horizontal and vertical. First of all, divide this circle into a number of equal parts. Then divide the pitch length, not the height of cylinder. Okay, pitch length. Here the height of cylinder and pitch length both are equal, so that we are dividing the height of cylinder into 8 equal parts. But divide that pitch length into number of equal parts which we are making for circle. Okay, divide the pitch length into 12 or 8 number of equal parts. Okay, now draw horizontal line from all the points. Okay, 1 2 3 4 up to 8.
horizontal line, okay, parallel to the diameter of this circle. Okay. Now find out the intersection of horizontal line passing from one and or vertical line passing from one in the top view as well as in the front view. Are you getting this one? Find out the intersection of horizontal line passing from one in the front view to vertical line passing from one in the top view. Okay, so you'll get a point P1. Similarly, intersection of 2 cross 2, you'll get point P2. 3 cross 3, you'll get point P3. P4, P5, 6, 7, 8. Write down the name of all the points. Now tell me, how many points will be visible? 5. 5. 5. 5 points. P, P1, P2, P3, and P4. P4. Now what about P5, P6, P7, P8? They will be Hidden behind points the cylinder. Behind the cylinder. They are behind okay. the Behind cylinder. the bar. Around the surface, but they're behind. Okay, uh, Behind the front view. behind the front view, means they're not visible. Okay, so sir. बगल में देखिए now see join P1 P1 P2 P3 P4 okay as a solid line okay like this okay because these points are visible okay now what about P4 P5 P6 P7 P8 Dotted line. dotted line okay because this is hidden these are hidden features or you can say hidden line okay hidden points so join with dotted lines okay so this is your helical curve upon a cylinder easy बन जाएगा Yes, sir. Yes, sir. okay now second helix upon a cone so draw a helix of one convolution upon a cone diameter of base 70 mm axis 90 mm and here the pitch is also 90 mm okay the axial advance during one complete revolution is called pitch okay so the pitch as well as the height of axis both are 90 mm first of all draw front view top view so in the front view you get an isosceles triangle and what about top view a circle okay of given diameter this circle now divide that circle into number of 8 equal parts or 12 equal parts okay next next किसको divide करोगे here we don't have any vertical line so what to do now Slantly. slant Yes, sir. okay suppose this is O and this is OP and OQ say this is 4 okay so either divide OP in 12 number of equal parts or O4 okay okay like this 0 1 2 3 4 up to 8 okay किसको डिवाइड करना है ओपी और किस लैंड OP. ओपी आर यू श्योर ओपी which one pitch length or slant height? Pitch length. Slant height. Pitch length.
Pitch length. What is the concept of helix? Pitch length or slant height? Which one? So pitch length. Pitch length. Sir, pitch Pitch length. length. That means Pitch length. 90 mm. Okay, divide that 90 mm into 8 equal parts. Not slant 80. height. Slant height. Okay. Axial movement. Axial movement means in the direction of axis. So axis is in the is a vertical direction. Okay. So divide this height 90 mm. Okay. This 90 mm into 8 equal parts. Okay. Are you getting this Yes, sir. one or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then write down all the numbers in a proper way, 1 to 8. Now find out the intersection of 1, 1. You'll get 1, 2, 2, 2, 3, 4, and all the numbers. Okay, join in a proper way, you'll get the helical curve. Okay, easy. Now I am not Yes. explaining the development of this curve. Okay, there is a separate chapter. Okay, this development of lateral surface. Okay, so while dealing that unit, I'll explain the development of this helical curve. Okay, Yes, in sir. the book, the development of Yes, sir. this helical curve is also there. Okay, I'm showing you the development. This is the development. Okay, figure number 6.672 is the development of this helical curve. Okay, so while dealing with those development of lateral surface, we'll see again these things. Okay, the development of helix upon a cone and helix upon a cylinder. This one is the upon a cylinder. Okay, this is showing the development P1, P2, P3 up to P12, left hand side of the cone. Okay, front view of cone. So don't bother about that. Okay, we will discuss those things in unit number 4. Okay, now tell me your Yes, sir. doubts. Okay, so unit 1 is completed now. Okay, you can ask your doubts. Sir, please explain involute of a circle of insufficient length. Okay, involute of a circle when the length of a string is less than the circumferential length. Okay, any other doubt? Any scales, No, sir. planes, diagonal, scale of chord, cycloid? Okay, so uh, involute of this one. Okay. Suppose the length of a string is less than the circumferential length. So we have taken the diameter of circle equal to 50 mm. Is it? Now, so the pi d length is coming 157. Okay, for that 50 diameter, and the length of the string is suppose 150. Okay, so find out the arc length for one division. T1, 1, 2, 1, 3. कितना रहा था arc length for one division? It is coming 19 mm. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, 19 mm means that 19 mm arc length is suspended an angle of 45 to O. Is it? Means the arc length 1, 2. What is the angle for arc length 1, 2? That is 45. For arc length 2, 3, 45. Arc length 3, 4, 45. Is it? The angle subtended by these arcs to center O. Is it 45 or not?
Yes. 360 divided by 8 कितना आता है? Yes, 360 divided 45. 45. 45. Now find 45. out the arc. Find out the angle subtended by arc of length 17 mm. So you can easily find out for 17 mm what will be the angle. कितना होगा? Anyone? 45. 40.26. 45. Not 45. 40.26. 40.26. So you cannot draw 40.26. Okay, either 40 or 41. So take it 41. Okay, 41 degree. Or sorry, 40 degree. So from this point, okay, from this O7 dash, draw a line inclined at 40 degree. Are you getting this one? From this O7, draw a line inclined at 40 degree. This one, 40 degree. Okay, so you'll get a point P7 in between P and 7 dash. Okay, is it okay? Yes, sir. Are you getting this one or not? How to locate this point P7? Yes, sir. How we are locating this point P7? First of all, find out the angle subtended by that 17 mm arc length, that is coming 42 degree. So starting from this O7 dash, draw a line inclined at 40 degree to this particular O7 dash 7 dash and find out the position of point P7. Now draw OP7, okay, line joining O to PL, okay, line joining O to PL, the last point, okay. Now draw a perpendicular to OPL, okay, means this is nothing but tangent, okay. We are drawing a tangent from this particular PL point like this, okay, this one. Now the last point will lie on this particular line, yes or no? Yes, sir. Okay, so center PL, okay, the curve will start from P7, yes or no? Yes. And what about the radius? Radius कितना होना चाहिए? Length of the string, which is given 150. That is nothing but P to L. Okay. So radius equals to 150 mm. Center PL, the last point, starting from P7 properly, make an arc up to PL. You'll get the last point of the curve. Easy? Yes, sir. Understood. Any other doubt in involute? Any other doubt? No, sir. यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अगर तुमको असाइनमेंट में भी प्रॉब्लम आए तो वो भी पूछो, ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यूज प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग, ओके. Figure number 3.4 and figure number 3.6. Figure number 3.4 is for capital letter and 3.6 for small letters. So you use proper way of writing. You can take height of letter writing either 6 mm or 8 mm. Okay, 6 to 8 mm. Okay. But use proper way of writing, proper way of dimensioning. Okay. Use H pencil for main work. You can also use H pencil for writing also. And use 2H pencil for construction work with nominal pressure. Sir. Okay, normal pressure. अगर H pencil को भी तुम, सर yes, सर वो एच पेंसिल और 2H पेंसिल एक ही तरह दिखता है, सर दिखता है। तो प्रेशर तुम वैसा रखो ना, नॉर्मल प्रेशर रखो, नॉर्मल प्रेशर के साथ करोगे तो H पेंसिल और 2H पेंसिल में डिफरेंस दिखेगा. अगर तुम प्रेशर वेरी करना सीख गए तो तुम H पेंसिल से ही कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हो.
हाँ सर, इसलिए एक एक पेंसिल से ड्रॉ किया। एक ही पेंसिल से ही सारा काम होता है आगे चल के। तुम्हारे पास हाँ एग्जाम में पेंसिल चेंज करने का टाइम नहीं रहता है। तो अगर तुम प्रेशर नॉर्मल रखते हो तो लाइट लाइन बनेगा। इफ यू इंक्रीज प्रेशर यू विल गेट थिकर लाइन। यस। थिकनेस इज अ रिस्पेक्टिव टर्म, ओके। तो यहाँ पे एक्सेसिव थिकनेस यस। नहीं दिखाना है, ठीक है। तुम्हारे लाइन यस। शार्प दिखने चाहिए। इफ यू आर ड्राइंग लाइट कंटिन्यूअस थिन लाइन, so that should be a sharp thin line, okay। सर एच पेंसिल इस्तेमाल करते दिखता ही नहीं है वो पेपर में, मतलब बहुत दिखता ही ही नहीं ज्यादा। है। एच पेंसिल। नहीं नहीं, जो लाइट वाला शेड है ना, जो वो दिखता ही तो नहीं है। देखो, एक बार ड्रॉ कर दो, उसके ऊपर एक बार रीड्रॉ कर दो तो थोड़ा थिक हो फिर वो जाएगा। उतना ही हो जाता है, वो डार्क सामान फिर नॉर्मल। ज्यादा डार्क नहीं रखना है, इसलिए शार्प रखोगे तो डार्क लाइन्स आएंगे, मतलब थिक लाइन आएंगे। पेंसिल अगर तुम्हारा ब्लंड है तो फिर नहीं आएगा वहां पे, वो लाइन्स फिर शार्प भी नहीं रहेंगे, ठीक है। यूज ओके एच पेंसिल फॉर मेन वर्क नॉर्मल प्रेशर के साथ, और टू एच पेंसिल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। तुम्हारा मेन पर्पस क्या है? टू शो डिफरेंस इन मेन वर्क एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वो दिखना चाहिए, ठीक है। जितने भी तुम्हारे कंस्ट्रक्शन लाइन है, वेल डिवाइडिंग लाइन, ड्राइंग डायमेंशन लाइन, ओके, ये सारे कंस्ट्रक्शन डायमेंशन लाइन भी लाइट ही रहते हैं, कंटिन्यूअस थिन लाइन, ओके। सर यस। सर स्केल्स में इक्वल पार्टीशन के लिए स्लैंटिंग लाइंस बना सकते हैं? हाँ, वही बनाना है, यस सर। ठीक है। वो तुम्हारा स्केल में कंस्ट्रक्शन लाइंस दिखने ही चाहिए। इफ यू आर गेटिंग LOS exact number, okay, then it is okay, you can divide with normal scale also। बट वहां पे मिलता कहाँ है LOS exact? मिलता है कभी? नहीं मिल रहा था सर। हाँ, नहीं मिलेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन तुमको करने ही पड़ेंगे। यूनिट नंबर 5 पढ़ो, ओके। जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, हाउ टू डिवाइड अ लाइन इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, हाउ टू बाइसेक्ट एंगल। ये तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए सारे के स्टेप्स। कहीं पे भी तुमको बाइसेक्ट करना है तो तुरंत वहां पे आना चाहिए कि हाँ ये स्टेप्स हैं, इससे मैं बाइसेक्ट कर सकता हूँ। और वो सारा कंस्ट्रक्शन लाइन लाइट रहेगा, क्लियर है। हमेशा एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा, ओके। यहाँ पे भी जो डिवाइड करना है P to P 8 पार्ट, तो यहाँ पे भी तुमको कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ से ड्रॉ अ लाइन इंक्लाइंड एट एनी एंगल, डिवाइड दिस लाइन फर्स्ट into number of equal parts, then draw parallel lines like this, okay। तो ये कंस्ट्रक्शन हर जगह रहेंगे। कहीं पे भी लाइन डिवाइड करना है तो ये कंस्ट्रक्शन करना ही है तुमको। अगर तुमको सिर्फ सर स्केल में अगर बताया, ठीक है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ स्केल के लिए हो। कहीं पे भी लाइन डिवाइड करना है तो ये कंस्ट्रक्शन होगा। आर गेटिंग दिस? नहीं, अगर वो मैच कर जा रहा है तो जरूरी नहीं है इसको हाँ, कंस्ट्रक्शन मैच करना। कर जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं, एग्जैक्ट नंबर आ गया 120 आ गया, उसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो कोई जरूरी नहीं तुमको हाँ। कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने हाँ सर। की। जहाँ पे नहीं आ रहा है, 114 डिग्री है, 114 डिग्री लेंथ है, है, उसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो तुमको करना ही पड़ेगा फिर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज। और कोई डाउट? नहीं सर। एनीवन? और किसी को डाउट है? अच्छा, कल ही स्केल ऑफ लास्ट डेट में देने का सर। फ्रेंच कर्व्स कैसे यूज करोगे? फ्रेंच कर्व्स, देखो, फ्रेंच कर्व्स यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, सपोज these are the points, okay, one second, okay, these are the points, okay, in this circumference of a satellite, say। ना इसको ज्वाइन कैसे करोगे? वहां पे बहुत सारे ज्योमेट्री हैं, तुमको कॉन्साइड करना पड़ेगा, यही है ना कॉन्सेप्ट। अब देखो, यस सर। सपोज दिस आर फर्स्ट 3 पॉइंट, 1 2 3। अब देखो, साथ में तुमको डार्क लाइन भी बनाने हैं, ओके। तो पहले ज्वाइन करोगे तो लाइट ही बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्साइड दिस 3 पॉइंट्स, ओके, and join this two, only two, okay। Now for the next segment considered 1 point, okay, 1 2 3, then starting from this one
Draw curve up to 3. For the next segment, take this 2, 3 and this one. Again join. Okay. Then this one, this one, this one. तो कर्व्स यहाँ से ड्रॉ करो तो वहां पे क्या होगा, जो तुम्हारा प्रीवियसली ड्रॉन कर्व है वो डार्क होते जाएंगे होंगे, हाँ और जो सर। तुम्हारा कर्वेचर है वो भी फॉलो होगा. Then you will get a smooth curve. Okay. Considered one previously drawn point and one for which you are making the curve. Okay. तो एक साथ वो डार्क भी होते जाएगा और तुम्हारा कर्व स्मूथ भी आएगा. Okay. Any other doubt now? Sir, one example of scale of chord. One example of scale of chord. वो तो दिया हुआ है, पीपीटी में एग्जांपल तो था ना. सर एक बार ट्रायंगल वाला बता देना जी. कैसे एंगल फाइंड आउट करना है? यस सर, उसको बता Good दीजिए call. प्लीज एक बार. ओके ठीक है. स्केल ऑफ कॉर्ड एंगल मेजरमेंट. ओके इसमें सिर्फ प्लेन स्केल ही है. One second. Plane diagonal and scale of chord. So the last one is a scale of chord. This one. Okay. Okay. Draw a triangle. Construct any triangle. So this is our triangle. Okay. Scale of chord already drawn है. Okay. ये steps तो पता है draw करने का. Okay. Yes. Now we want to find the angle x y y x z, means this one. Okay. This one. Say this is theta. We want to measure this theta angle. Okay. Now can I draw like this for this angle theta? ये सब क्या है? These are concentric arc. आर्क. Now this one is a chord length. Okay. This one is also a chord length. Okay. ये सारे आर्क का एंगल कितना है? What is the angle subtended by these arcs to x? थीटा. Theta. थीटा. Okay. What is the name of scale? Scale of chord. स्केल ऑफ कॉर्ड. Can we use any of the chord length for measuring this angle x? Can we use any of the chord length from this No, sir. 6? यस सर. Yes. Who is saying yes? No, How? sir. Explain. If you are saying yes, how can you use? Which one is preferable? कौन सा लेना चाहिए? OA. सर ये पहले मेजर करके वो आर्क बनाएंगे. देखो ये सारे 60 आर्क का. हैं, लेकिन हमको वो आर्क चाहिए जो इससे कोइंसाइड करे इस A to 90 डिग्री के साथ. मींस हमारे सर लिए OA वो लेना आर्क, पड़ेगा. वो आर्क सर ओए की काम लेंथ का है, लेनी पड़ेगा. या जिसके लिए रेडियस कौन सा हो, जिसके लिए रेडियस हो OA. ओए. क्लियर. तो यहाँ पे O मार्क करो, रेडियस लो OA, रेडियस ऑफ स्केल ऑफ कॉर्ड. यहाँ पे 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करो. से दिस इज A, दिस इज आल्सो A. क्लियर. अब इन दोनों A और A के बीच में एक डिस्टेंस होगा, वो भी एक कॉर्ड लेंथ होगा. ये कॉर्ड लेंथ हमारे लिए काम है, जिसको हम लोग यूज करके यहाँ से मेजर करेंगे एंगल. तो ये लेंथ मेजर करो A to A. यहाँ इस पॉइंट A को सेंटर लो, आर्क कट करो. जहां पे भी कट किया आर्क, वो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा. क्लियर. यस सर. Is it clear? Now suppose sir. the arc is in between 30 to 40, exactly in this mid position, then the angle will be 35 degree. लेकिन इसके बीच में कहीं पे आता है, 30 to 40 के बीच में कहीं पे आता है, तो कैसे करोगे? Exactly नहीं मिल रहा है कहीं पे भी. Then divide this 30 to 40 in number of 10 equal divisions and find out the exact position of that arc. Are you getting this one? Yes, sir. Yes. Okay.
सपोज ये 36 एंगल है, तो वहां पे एग्जैक्टली वो 6 पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा। ओके, यस सर। यस एनी अदर सर। डाउट नाउ? एनी अदर डाउट? सर कल तक जमा करना है पूरा। सर मतलब दोनों को अलग अलग पीडीएफ बनाना है कि एक एक पीडीएफ में दोनों असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 1 के लिए अलग पीडीएफ रहेगा, असाइनमेंट नंबर 2 के लिए अलग पीडीएफ रहेगा, असाइनमेंट नंबर 3 के लिए अलग पीडीएफ रहेगा, एक सिंगल पीडीएफ। असाइनमेंट नंबर 1 में जितने भी फिगर्स हैं उनका एक सिंगल पीडीएफ बनेगा। क्लियर है? असाइनमेंट नंबर 2 में जितने फिगर्स रहेंगे उनका एक सिंगल पीडीएफ बनेगा। ओके, तो जो इक्वल डिवाइड करने के लिए कंस्ट्रक्शन के वो क्या बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए? दिखने चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए ऐसा नहीं है, वो मेन वर्क से लाइट रहेगा, वो दिखना ही चाहिए तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल नहीं दिखेगा तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? कैसे पता चलेगा हमको कैसे डिवाइड किया? सैंपल ड्राइंग तुम लोग को भेजा हूं ना मैं, सैंपल ड्राइंग क्लासरूम में चलते हैं, मैं सैंपल ड्राइंग से दिखाता हूँ। वी हैव 5 मिनट्स, समझे ना? IT, okay, this one. Is it visible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So coming to scale part directly. Okay, see. You can see the difference. Main scale and construction work. Yes, sir. Difference है ना? Yes, sir. Yes, sir. And see the writing style also. Writing style दिख रहा है? Yes, sir. Okay. ये सैंपल किस लिए शेयर किया? यहाँ पे भी देखो, see the difference. Okay, and if you are writing in between the construction line, erase those part. Okay, only those portion where you are writing, not all construction work. Okay, suppose देखो यहाँ पे इसने erase नहीं किया, erase those portion. Okay, wherever you are writing. Okay, and this one see. Okay, हाँ यहाँ पे ये लाइंस भी डार्क रहेंगे, ठीक है? जो तुम्हारी ये डायगोनल लाइंस हैं ये डार्क रहेंगे, यहाँ पे इसने डार्क नहीं बनाया है, डायगोनल लाइंस शुड बी डार्क. ओके, you can see the writing style. Okay, ट्राई करो, बनेगा क्यों नहीं बनेगा? कितने बच्चों ने जमा कर दिया है? अच्छा, तुमको देखना है, लाइव दिखा देते हैं तुमको कितने बच्चों ने जमा किया है। असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 1 एंड 2. ओके, अभी तक 19 लोगों ने जमा किया है, 75 लोगों ने जमा नहीं किया, 70. ओके, 19. ओके, डेट कब तक है? ड्यू टुमारो, कल तक सर। कल तक। कितने लोगों का हो जाएगा कल तक? हो जाएगा सर। हो जाएगा हो जाएगा सर। बस वही पढ़ा दी। हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा, सबका हो जाएगा कल तक। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, ओके, तो अभी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास क्या है? मैथ्स, मैथमेटिक्स। आज तीन ही क्लास था। आज इतना ही है और क्लास नहीं है आज? No, sir. ओके, डाउट है तो पूछो फिर। नहीं सब बनाना है। आप बनाना स्टार्ट करो, कभी भी तुमको डाउट आता है मैसेज करो ग्रुप में। ओके, कोई भी डाउट रहे। सर सर इजी का एमसीक्यू भी होगा? हाँ, एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू 1 होगा, एमसीक्यू 2 होगा। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल भी है ना, ये पहले से दिमाग में रखो। दिस इज नॉट ओनली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ओके, यस तो सर। प्रैक्टिकल है तो तुम्हारा प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा, तुम्हारा
थ्योरी 100 मार्क्स का होगा। एक पेटेंट भी जमा करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस देंगे पेटेंट्स के लिए, पेटेंट जमा करना है तुमको, ठीक है। फिर तुम्हारा एक मिड सेम वाइवा होगा फॉर प्रैक्टिकल, ओके। तो जैसे ही हम लोग 2 यूनिट कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, देयर विल बी अ वाइवा, ओके, फॉर मिड सेम वाइवा फॉर प्रैक्टिकल। फिर लास्ट में 2 वाइवा होंगे, थ्योरी वाइवा एंड प्रैक्टिकल वाइवा। And TA is based on your attendance, your drawings, assignments, okay. ये 40 marks for practical, 20 marks for theory. So 60 marks is based on your assignments and attendance, okay. Attendance की भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तुम्हारा assignments ज़्यादा important रहेंगे वहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा काम कैसा है, ओके। Yes, sir. तो असाइनमेंट अच्छे से करो, टीए अच्छे से मिलेगा। यस सर। गुड, यहाँ पे ठीक है। तो चलो, और कोई डाउट है तो पूछो, या फिर क्लास एंड करते हैं। सर एमसीक्यू में किस तरह के सवाल आते हैं? एमसीक्यू में तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे आज मैंने एक बताया था, व्हेन द अटेंडेंस व्हेन द ओके, अटेंडेंस तुम्हारा 1 सेकंड अटेंडेंस तुम्हारा ले ही लेते हैं, आज तुम्हारा वो नहीं है ना, 1 सेकंड डायरेक्टली अटेंडेंस, 1 सेकंड। सर अभी हमको रोल नंबर नहीं मिला है, सो कैन वी राइट आवर सीरियल नंबर? या सीरियल नंबर, ओके, प्लीज, ओके। सर जेई का एप्लीकेशन नंबर सब में मैं लिख दिया हूँ। ओके, अभी अटेंडेंस होगा, ठीक है, लीव मत करना, अटेंडेंस मैं ले ले रहा हूँ, ओके। सर यस, सो रोल नंबर की जगह मैं जेई का एप्लीकेशन नंबर लिख दिया हूँ सर। नहीं जेई का एप्लीकेशन नंबर नहीं लिखना है, जो तुम्हारा यहाँ का स्टार्टिंग सीरियल में नंबर आपने है वही बोला था। तुम्हारा रोल नंबर रहेगा। चलो, आज तारीख कितना है, डेट आज है 29, 29. 1 सेकंड, 29 11 12 2021 अटेंडेंस रिलेटेड। चलो, रोल नंबर 1, मतलब सीरियल नंबर 1, अदर्स, पहला ही ऑप्शन। सर वो प्रेजेंट है, उसका माइक काम नहीं कर रहा है। Present से सर वो उसका माइक काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है। देन आर्यमान सिंह चौहान, प्रेजेंट सर। आयुष वर्मा, प्रेजेंट सर। अभिजीत भौमिक, प्रेजेंट सर। सर अभिजात है वो। ओके, अभिजात, ओ सॉरी, अभिजात।